बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कमर्शियल ज्योग्राफी हमारा ये जो है लेक्चर 4 है, क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट वी हैव इन आवर लेक्चर, डिफाइनिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। ऑब्वियसली हमारा पार्ट है कि हम कमर्शियल एक्टिविटीज को डिफाइन करें। टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज विद एग्जांपल, उसकी कुछ टाइप्स देखें और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें। देन वी हैव एन स्टूडेंट एक्टिविटी शीट। फाइनली वी हैव एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड टिप्स। ये वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, ये वो टिप्स हैं कि जिसके जरिए आप अपने पेपर के अंदर, कमर्शियल ज्योग्राफी के पेपर के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हो। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में हमारे पास आते रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है जी, लेट अस बिगिन। Definition of commercial activity. Commercial activities. First, commercial geography is a branch of economic geography. Chisholm has defined commercial geography as the intellectual interest to the study of geographical fact relating to commerce. In commercial geography, the production, consumption, trade, transport, communication, and related services are studied in relation to the environment. The culture and nature environment influence the commercial activity, which causes the unevenness in the commercial practices. बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर कोई इंसान जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में रहता है तो उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज डिफरेंट होगी। अगर कोई शख्स सब ट्रॉपिकल रीजन में रहता है तो उसकी कमर्शियल एक्टिविटी डिफरेंट होंगी। और अगर वो जो है वो किसी ट्रॉपिक कोल्ड एरिया में रहता है तो उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे हमारे पास। इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल एक्टिविटीज। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर द थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. Man fulfills these needs from the surrounding environment. He fulfills his need of food by hunting the animals, catching the fish, collecting the fruit, or producing grain from agriculture. He uses cotton, wool, and silk, leaves of tree or leather for clothing. He constructs house by using stones, bricks, lime, cement, ice, wood, etc. In the attempts of fulfilling the needs from the surrounding environment, he performed different types of activities. The activities that a man performed to earn their livelihood are known as commercial activities. So this is a very simple definition of a commercial activities. Now we have a classification. The commercial activities can be classified into 5 main types, namely primary activities, secondary activities, tertiary activities, coronary activities, and quaternary activities. So primary activities. Primary activities produce raw material. The workers that are involved in primary activities are called red collar workers. Primary activities include those occupations which are closely related to main natural environment, like food gathering, hunting, fishing, lumbering, animal rearing, farming, and mining are some of important examples of primary activities. Then we have a secondary activity. Secondary activity, also called the manufacturing activity. The workers that are involved in secondary sectors are called blue collar workers. Secondary activities are those activities which involve the manufacturing of finished goods by producing the raw material that come from primary activities. This sector has developed because of the demand of more goods and services, and it helped in the industrialization process. For example, these activities include cooking, baking, weaving clothes, manufacturing steel, or any other kind of manufacturing comes in the secondary activity sector. In the developed country like the USA, nearly 20% of the workforce is involved in this sector, and they are also known as the blue collar workers. We have a tertiary activity. Tertiary activity is a service oriented activity, and it occupies the massive part of the population. They are called the pink collar workers. Tertiary activities are service based and give non-tangible value to customers. Tertiary activities are concerned to provide services rather than production of tangible goods. Example of companies that work in this sector include banks, retailers, clerks, barbers, consulting,
and public transport. Most companies that are involved in tertiary activities do not have operation in involving primary or secondary activities. Now we have fourth activity, that is a coronary activities. Coronary activity, knowledge sector activities, white collar worker. They are called white collar worker. Coronary services represent a special type of services work focusing on professional and administrative services. These activity includes financial and health services, information processing, teaching and government services, and entertainment services. Almost all activity related to coronary services take place in the office building environment or environment like those provided by a school, hospital, hotel, trades, etc. The diagram also shows the versatility of the services as well. Coronary activities. Coronary activities, also called the elite administrators. Their worker they are involved in coronary activities are called gold collar workers. Coronary activities are services that focus on control, such as government and creation of non-routine use or creation of information and new technologies. They include the chief executives and other top management officers in the government as well as private services, researchers, legal authorities, financial advisors, and professional consultants providing planning and problem solving services belong to the workers engaged in this category of economic activities. There is an example of this business oriented activity we have here. Now, let us look this diagram. He is John. He's a miner. He involved in primary activities. He is Smith. He is a plumber. He involved in secondary activity. She is Sarah. Sarah is a nurse and she is involved in tertiary activities. That is Smith. He is a computer programmer and involved in culinary activities. This is a level of economic activities that we have primary, then we have at the lower level, we have a primary activities. Extract and use the natural resources of the earth. Then we have next level secondary activities, the manufacture good using the raw material provided by the primary sector. Then we have a tertiary sector, provide services to consumer and the other sector of industry. This chart shows the level of economic activities. Now come to the worksheet. वर्कशीट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की वर्कशीट में क्या चीज़ मौजूद है. ऑब्वियसली जो भी कुछ मौजूद होगा हमारे लेक्चर का पार्ट होगा. तो स्टूडेंट एक्टिविटी शीट, मेक अ लिस्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. यहाँ पर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कॉर्डनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज दी हुई. आपने इनकी लिस्ट मेंटेन करनी है एज वेल एज इनकी डेफिनेशंस भी लिखनी है ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए. दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड टिप्स. इन 2019 डिफाइन कमर्शियल एक्टिविटी, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल. सेक्शन सी में आया है. सेक्शन सी का मतलब है इज ऑफ कैरिंग 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. ठीक है. 2018 के अंदर व्हाट आर द टू वेज टू ग्रो कमर्शियल एक्टिविटीज, सेक्शन बी में आया है. बी का मतलब है 4 नंबर का एक क्वेश्चन है. 2017 लूमनिंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेक्शन है. इसका मतलब है 1 नंबर का ये एमसीक्यूज है और सेम ईयर में शॉर्ट नोट मिलेगा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2017 में, जो कि 4 नंबर का होगा और सेक्शन सी के अंदर आएगा. 2016 में शॉर्ट नोट इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्शन सी. 2016 the activities that are related to production, consumption and exchange are known as section A का पार्ट है, यानी कि ये MCQs में आया है. 2015 the economic activities most depend upon which of the following type of activities, सेक्शन A के अंदर आया है. आपको अगर हम इसको हम देखें कि ये एक MCQs का पार्ट है. क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम ईयर में सेक्शन बी में आया है जो 4 नंबर का पार्ट है. 2014 में डेफिनेशन देनी है कमर्शियल एक्टिविटी, सेक्शन बी में आया है ये. 2014 में ही कमर्शियल एक्टिविटी एक्सप्लेन विद एग्जांपल, सेक्शन सी में आया है. 2013 में भी देखें आप, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज आया है और ड्रॉ अ चार्ट टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज बाय लेवल ऑफ एक्टिविटीज, सेक्शन सी के अंदर आया है जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है. नोट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कमर्शियल ज्योग्राफी सब्जेक्ट सिंस इंसेप्शन. तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है एंड इंशाल्लाह इट लाइकली टू बी अपेयर इन नेक्स्ट एग्जाम एज वेल. तो एक्टिविटीज को हम यहाँ पर अपनी ख़त्म करते हैं. नाउ वी हैव अ लेक्चर सीरीज नंबर 4 जो प्राइमरी एक्टिविटीज अबाउट फिशिंग होगी और फिशिंग के ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. हमारा कॉलेज का, गवर्नमेंट पीएम कॉलेज का एक ग्रुप भी बना हुआ है स्टूडेंट का व्हाट्सएप का, जिसके ऊपर हम कनेक्टेड रहते हैं और जो है हम उसके ऊपर जो नॉलेज है वो शेयर करते रहते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.